नमस्कार दोस्तों, कहानी हम सब की में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। दोस्तों, आज जो वीडियो सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, ये हमारे बाकी वीडियो सीरीज से बहुत अलग होने वाली है। और मेरा आपसे ये वादा है कि हम लोग आज जिस धरती पर रह रहे हैं ना, ये वीडियो सीरीज आपको उस धरती के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, यदि आप एक एनिमल लवर हैं तो आपको ये वीडियो सीरीज बहुत पसंद आएगी। और अगर ऐसा है कि जहां आपको एनिमल से डर लगता है, तब भी मेरा यह दावा है कि आपका इन एनिमल्स की तरफ देखने का नजरिया कंप्लीटली बदल जाएगा। बचपन में हमने कई सारी कहानियों की किताबें पढ़ी होंगी, जैसे जातक कथा, हितोपदेश, लायन किंग एंड ऑफ कोर्स हमारी फेवरेट जंगल बुक। हम सब ने मोगली के बारे में सुना है। मुझे आज भी याद है कैसे हर रविवार को सुबह हम टीवी के सामने बैठ जाते थे और गाना याद है ना, जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। दोस्तों, एक्साइटिंग बात आज ये है कि हम ऐसे एक रियल लाइफ मोगली से मिले। और ये जो रियल लाइफ मोगली है ना, उनका नाम है तौसीफ अहमद। तौसीफ ऐसे ही एक जंगल के वातावरण में ऐसे अलग अलग प्राणियों के बीच पले और बड़े हुए, और आगे चलकर उन्होंने एमबीए किया। लेकिन लाइफ का उनके बारे में शायद कुछ और ही डिसीजन था, लाइफ ने उनके बारे में कुछ और ही सोचा था। और इस तरह तौसीफ ने अपने एक ट्रू कॉलिंग को पहचाना और उन्होंने इन खूबसूरत प्राणियों के लिए, उनको नर्चर करने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए अपने जीवन को डेडिकेट करने का उन्होंने डिसीजन ले लिया। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं तौसीफ अहमद से। तौसीफ, वेलकम टू आवर चैनल कहानी हम सब की। थैंक यू। बहुत खुशी है आपको आज यहाँ बुला करके आपसे बात करते हुए, बहुत खुशी हो रही है तौसीफ। थैंक यू, प्लेजर इज ऑल माइन। बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। इट फील्स नाइस टू बी इन्वॉल्व विद थिंग्स लाइक दिस। तो खुशकिस्मती हमारी है कि हम यहाँ पे। ग्रेट ग्रेट। तौसीफ, वी हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू, बहुत सारी बातें सुनी है, एंड आई एम श्योर you are doing something which our viewers also would be very very keen to understand a lot of things about it, but we'll come to that gradually. To begin with, हम जानना चाहेंगे आपसे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, हाउ वाज योर चाइल्डहुड, कैसा बचपन रहा आपका, प्लीज उसके बारे में कुछ हमें बताइए। To begin with, I was born and brought up in a place called कुद्रेमुख। यहाँ से 100 किलोमीटर आप अगर कारकड़ा से आगे जाएंगे तो इट्स नेस्ल्ड इन बिटवीन वेस्टर्न घाट्स, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओके, तो इट्स अबाउट 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। इट्स बेसिकली अ फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट। हाँ, तो मेरे फादर वहाँ पे कुद्रेमुख कंपनी में ही वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर, सो दैट वाज अ सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी। सो वी हैड सम गवर्नमेंट क्वार्टर्स एंड एवरीथिंग। सो बचपन वहीं से शुरू हुआ। सो आई वाज देयर फॉर अबाउट 18 years, एंड दिस ब्यूटीफुल प्लेस इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट हेवनली प्लेसेस आई हैव एवर लिव्ड ऑल माय लाइफ। वाओ! क्योंकि जंगल के बीच में वो टाउनशिप बनाई गई थी, एंड माइंस वे देयर, आयरन और माइंस था वहां पे। ओके, तो बचपन काफी सिंपल रहा, क्योंकि देयर वाज नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम खाना, कपड़ा और व्हाटएवर छत। देयर वाज नथिंग एल्स। जो भी आप ये चमक धमक देखते हैं सिटी की, इट वाज नेवर देयर। So it was a very beautiful place and people were very simple, to down to earth जो भी है, and more than anything animals. तो वी हैड एनी टाइम, अगर आप हमारे घर पे आते तो घर के सामने you would see 7 to 8 dogs sleeping in our yard. Okay. And I think it all started basically from the parents, this thing. तो ये लोग खाना डालते थे तो हम उसको देख के, I have a younger sister. All right. So we would look up to them and whatever was done, that is where it all started from. There was no veterinary facilities, no nothing. तो what my parents would basically do is the turmeric powder that you get, हल्दी जो भी रहती है, that would be the basic medicine for everything. किसी को घाव लगा है, घाव पे हल्दी लगा दो, पेन है तो दूध में हल्दी मिला के पिला दो। So this was the basic thing. So this is where it all started from. Wow. So we had dogs, cats, we had cows which would come, and snakes तो every day आना जाता रहता था क्योंकि it was a reserve forest.
We had even cases of foxes, wild boars, elephants coming in our backyards. So Oh that is how basically everything started. my God. So yeah, so 18 years I was in Kudramukh. तो उसके बाद of course for further this thing I had to move on to Mangalore. तो ये बचपन में आपका उनके साथ खेलना वेलना होता था कुछ कैसा, मतलब कुछ अगर आपकी ऐसी यादें हो एनिमल्स के साथ कैसे आपने वक्त बिताया हो, तो प्लीज. Yes. No, we have had a lot of memories क्योंकि I think जो भी the person I have become today, a lot of credit goes to what my childhood was those days. तो वहाँ से जो भी हमने देखा सीखा, like there's a philosophy itself whereby which says as a child whatever you are taught on a very early on stage in life, Right. it eventually goes on to become a habit and then it becomes your character. Absolutely. तो जो भी हमने देखा, these days we see not many but lot of parents, I'm sorry to say this, but जब भी कुत्तों को गली में देखते हैं तो बच्चों को पत्थर मारने के लिए बोलते हैं, otherwise they themselves show it and kids look at that and Right. I think this is the right thing to do. Luckily we were never taught any of these things. People around us also were very nice. So I think that was a natural phenomenon that we picked up. I remember a very beautiful incident whereby a bull used to come to our house every day. We used to stay in a ground floor house. So we had a gate. So and that gate had वो latch जो रहता है ना, वो ढीला वाला रहता था. तो this bull would come on unusual time. It's a stray bull. पर जब भी हमारे घर के नजदीक से गुजरता था, तो he would come and stand near the gate and wait so that leftovers कुछ मिल जाएंगे खाने के लिए. Okay. And sometimes he would be inside the house, so we wouldn't know he is there. You know what he would do? उसके अपने जो हॉर्न रहता है ना, वो गेट में घुसा के he would shake the gate ताकि वो हिलेगा तो पता चलेगा we will come out. Oh wow. So these are all small little things that we usually avoid in our day-to-day life. But वहाँ से देखते देखते we picked up this thing. I was maybe about 15 or 16. The first snake that I handled as well वहाँ पे. I do snake rescues as well. तो वहाँ पे there was a cement tank that was made in a park. So we would pass by that place every single day, me and my friends for tuitions. And I would see this snake. There was no water in the tank. And 3-4 days I saw. Then I realized he was probably stuck there. He couldn't come out. Oh, okay. कैसे तैसे करके शायद अंदर चला गया था. But he didn't know to come out. Then I got down into the tank and थोड़ा कीड़ा था वो National Geography वाला, Discovery वाला. I managed to put a stick on the head and caught it. Luckily, it was a non-venomous snake. That's a different thing. But I think it all started somewhere deep down there. And then once I moved into Mangalore, then I realized people are more scared of snakes than anything else here. Yeah. So then थोड़ा वो heroism था उस जमाने में whenever we were students. तो थोड़ा थोड़ा करते करते then now calls have started coming from a lot of places. Okay. But that is how I think, as I said, a lot of credit goes to my upbringing, environment, and parents, of course. More than anything, I think the place where I was there. So that I think. I don't know how to put it, but that actually instilled a lot of things in me जो शायद अभी भी कंटिन्यू हो रही हैं. Wow. आपका स्कूलिंग वगैरह वहीं हुआ था उसी जगह पे? जी. We had education system only up till PUC वहाँ पे, जो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज रहता है. Correct. तो after pre university college there was no other option. We had to move out. Okay. So I came down to Mangalore in 2006. Okay. I did my BBM and MBA from SDM College of Business Management itself. So 5 years I was in SDM, and again that place has also a lot of things that has given me. Picked up a lot of things because I came from a very small town and I was a very scared kid at that point of time because the city is so huge. Like I said, we hardly had about 3,000-4,000 people in the town that I lived in. Right. So that inferiority complex was there and a lot of things. But yeah, Mangalore has given me a lot of things. But yes, after Kudramukh, I moved on to Mangalore and I did 5 years of education here. So उसके बाद ये अपना ही घर बन गया अभी. We didn't want to go back. My family basically belongs to Bangalore. अच्छा. My parents are from Bangalore. Oh. Okay. Because of the job, my dad had to move on to Kudramukh. उसके बाद we came to Mangalore and this has become our like अभी जीना मरना ये सब यही पे है. So hopefully we'll be here for. You know, while you are sharing this, you being with so many animals, तो वो हम तो movies में देखते हैं, you know, so film like Lion King or a movie like the Mowgli movie playing with all animals. Suddenly I got those visuals in my. ऐसे ही आप भी खेला करते थे क्या animals के साथ? Yes. बहुत सारे
टिल देन वो जो भी अभी थोड़ा ऑफ लेट जो स्टिग्मा शुरू हुआ है स्ट्रीट डॉग्स और वॉट एवर ऑल दोस थिंग्स अभी जो शुरू हुआ है, आई डोंट थिंक सो दीज थिंग्स आर स्टिल नॉट देयर इन जो अभी आपके छोटे गांव हैं, छोटे शहर हैं, टाउन से विलेजेस से, क्योंकि वन थिंग दैट आई पर्सनली नो एंड आई हैव सीन इज जो भी छोटे शहरों से लोग आते हैं, टाउन्स विलेजेस आर वेरी इनोसेंट, दे आर वेरी अटैच टू नेचर, वेरी क्लोज टू नेचर, एंड दे जो भी छोटा मोटा इंसिडेंट होता है वहीं पे इट्स फॉरगॉटन. इट्स नॉट Right. लाइक इन बिग सिटीज विच गोस अराउंड इन मीडिया एंड कीप सर्कलिंग अराउंड, इट बिकम्स अ ह्यूज इशू. See, out of 100 dogs, one or the other dogs will someday something will happen. It will end up जो भी छोटा मोटी घटनाएं होती रहती हैं. पर there it is not like that. You just forget it and move on. तो अपन को वहाँ पे like as I said, it was more of how do I say, Abibi, to be very honest, to be very frank, with no offense to anyone, I am more comfortable being around animals in a room. If you put me around 100 animals, whatever animals for that matter, very comfortable than being around 100 people. Oh. So that's how it is. Animals will not unnecessarily hurt you or pinpoint something at you or judge you for something. They will judge you for what you are to them. Wow. Unlike people who will talk to you sweetly on the face and backstab you from behind. So animals have that kind of a nature. So that's the beauty of nature, and that's how God created them. We are the only species who have evolved into something else that we are not supposed to. Like in that innocence and that natural this thing that you find in animals, so that is what attracts me to them, and I think it has always somehow pulled me towards them right from when I was a kid. Right. So it becomes a part of me, I think, after a point of time. So ये आपने कहा MBA किया आपने जी. और ये MBA करना और अभी जो आप काम कर रहे हो, how did that happen, that transition happen, कि कैसे आपने ये सोचा कि नहीं, क्योंकि MBA करके ज्यादातर ये होता है कि I work in a corporate, Yes, and I yes. earn high salary, I do that. Yes. तो ये कैसे हुआ? In fact, अभी भी I am actually the vice president of our alumni association in the college that I was. So अभी भी whenever I go, our professors keep on telling, we always thought you were a corporate material, Tauseef. But we are still happy whatever you're doing, but we thought you would end up in some corporate. I don't think so I was ever made for a corporate 8 to 5 job or whatever that thing is there. I like being free. जैसे बैल घूमते रहते हैं ना आपके गलियों में, I like, I still tell people at home also, I am like that lone bull who keeps roaming around in the forest, doesn't have anything, no this thing जो भी इधर उधर. I like being like that. Right. And I don't like someone sitting on the top and telling me what to do and all those things. I like being my on this thing. Right. So yeah, 2011 I finished my MBA. I have an MBA in marketing. I have a PG DBM in HR again, so I have Wow. dual specialization. So initial plan तो वही था कि जाते हैं 5-6 साल कहीं पे outside, will work somewhere, थोड़ा पैसा कमा के लाके यहाँ पे will do something of my own. Then I worked for a couple of builders in Mangalore who are into developing properties and everything. Okay. I picked up the skills of whatever how the properties and this market works. Then I realized I had something in my mind already. So what I am planning to pursue in life, for that I can't do a full-time job. Right. Because 8 to 5 you're sitting in the office, I cannot go on the whatever things I like to do. So then I started doing a few things here on my own. Even now my bread and butter basically comes from, I do a little bit of real estate and everything in Mangalore. I do deal with that. Okay. But then this passion which started off with maybe पहले दिन के 1-2-3 cases जाके attend कर लो, आ जाओ, whatever. Now every day 5 to 10 calls I get usually. Cows, dogs, accident cases, a lot of things. So this occupies a lot of my time. So आप पैशन बोल लो उसको, हॉबी बोल लो, वॉट एवर यू कैन कॉल इट, दिस टेक्स अप अ लॉट ऑफ माई टाइम. तो चलता है, it goes on, and after a point of time it comes to a stage whereby you can't, it's basically like there's a statement about mafia. Once you get into mafia you can't get out. So once you've gotten into this, even if you don't want to do it, people will call, बोलते हैं यहाँ पे कुछ हो गया आप देख लोगे. And when people call you, they call you with a sense of hope. Yes. Because they would have called 10 other places, nobody would have responded. Right. They'll be like, आप तो कुछ कर लो at least जाके. And then when you yourself don't go, you never know, that person who has called you with that ray of hope, that person might not even try to help an animal next time. Yes. Like ये लोग आएंगे नहीं, करके फायदा क्या? You know, so every time you get a call, you try to do the best.
राइट। तो जो भी है goes on. Earlier I used to be available 24/7. अच्छा। रात को भी I used to attend cases and Okay. everything and all. Okay. And because certain circumstances and some couple of incidents that have happened, now I have till 8, 9, 10 I am Okay. available in the night. Okay. Then after that I don't attend cases anymore. तौसीफ एनिमल्स के बीच पले बड़े और इवेंचुअली शहर में आए और उन्होंने अपने आप को शहर के वातावरण में ढाल लिया। मेन स्ट्रीम में रहते हुए उन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की और मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज में डबल स्पेशलाइजेशन किया। उस वक्त शायद उन्होंने यही सोचा था कि वो भी एक यूजुअल पाथ लेंगे और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नौकरी करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो नोट करने वाली बात है वो है उनकी इनक्रेडिबल रिफ्लेक्टिव एबिलिटीज, जिनकी वजह से उनको एक बात समझ में आ गई कि उनको इंडिपेंडेंट रहना ही अच्छा लगता है, उसी में उनको खुशी मिलती है और इसके साथ साथ एनिमल्स के बीच रहने में उनको खुशी मिलती है। लेकिन वो प्रैक्टिकल भी थे और इसलिए जानते थे कि एक रेगुलर इनफ्लो ऑफ मनी भी बहुत जरूरी है और इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनने का फैसला किया, जिसकी वजह से उनकी ब्रेड एंड बटर यानी उनकी रोजी रोटी चल सके और वो अपना ज्यादातर वक्त उस काम के लिए दे सके जो काम करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, यहां तौसीफ हमें यह बात सिखा रहे हैं कि जो काम करना हमें अच्छा लगता है उसको अगर हम करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। और ये जो बात है, ये बात हमारा ध्यान हमारे एग्जिस्टेंस के जो 3 लेयर्स हैं उसकी ओर ले जाती है। कौन से 3 लेयर्स? मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, जिसे हम माइंड, बॉडी और सोल कहते हैं। सो जो काम हमें खुशी देता है उसको अगर हम करते हैं तो वो हमारी मेंटल हेल्थ को पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है, हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स जनरेट करता है और इसी की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ बरकरार रहती है। और जब मेंटल हेल्थ बरकरार रहती है तो फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहती है और जब माइंड और बॉडी दोनों ही हेल्दी होते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी रहती है। और ये स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है? फर्स्ट, being empathetic. Second, being compassionate. Third, gratefulness. Fourth, forgiveness. And fifth, doing the better good. और यही तौसीफ हमें सिखा रहे हैं। दोस्तों, ये बात समझकर सुनकर इतना अच्छा लगता है कि एक यंग लड़के ने, जिसे हम मिलेनियल कहते हैं, बाकी सारी बातों को छोड़कर हैप्पीनेस को चुना। और हम जीवन में कई बार सबसे बड़ी गलती यही करते हैं जब हम सोचते हैं कि हम पैसे के पीछे भागेंगे तो हमें सारी खुशियां मिल जाएंगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। जब हम हैप्पीनेस को चुनते हैं और जो हमें अच्छा लगता है वो करते हैं तो पैसा अपने आप हमारे पीछे आने लगता है। तो एज पेरेंट्स हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो आज की ये जनरेशन है, जिसे हम मिलेनियल्स कहते हैं या जेन जी कहते हैं या जेन अल्फा कहते हैं, हम उनकी नीड्स को पहचानें, उनकी नीड्स को अप्रिशिएट करें और उन्हें जो अच्छा लगता है उसको चुनने की उन्हें आजादी दें। और जब हम उन्हें ये आजादी देंगे तब हम इस दुनिया को हेल्दी एडल्ट्स दे पाएंगे इन ऑल एस्पेक्ट्स, माइंड, बॉडी एंड सोल। और हां, यह जरूर हो सकता है कि शायद वो जो पाथ हमारी जनरेशन चुनेगी वो शायद कोई एक ऑफबीट पाथ हो सकता है, या हमारी जनरेशन ने जो किया उसके साथ वो अलाइंड ना भी हो, लेकिन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस धरती को, इस दुनिया को हैप्पी एडल्ट्स देने की, वो हम जरूर पूरी कर पाएंगे। आगे चलकर हमने तौसीफ से यह पूछा कि जो वो काम कर रहे थे बाकी लोगों को कैसे पता चला कि वो एनिमल्स के लिए इतने अच्छे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने हमसे ये कहा। How did people come to know that you do this, or you provide this kind of service? How did people come? I think it's a lot of credit goes to social media. अच्छा। I have nothing. I don't have a team.
I don't have an office. I don't have a publicist. I don't have a media handling people. Nothing. Everything is right from someone calls me, I handle the call. I take down the address. I go and attend the case. Even handling the animal, I do it alone. Oh. After that, if the animal has to be taken to a shelter or to a vet for some specific treatment, that I do it on my own again. Okay. Following up the case, fundraising, everything is single-handedly done here. And database management is very important. So where you pick up the animal from, when was the treatment, what is the mode of the treatment, when was it released back, everything has to be handled by a single person. So sometimes it becomes a little problematic, but then that's where the challenge lies. There are same thing which is being done by a lot of teams. If you go around in a lot of other cities as well, you have proper NGO setups where fundraising is a different team. People who attend cases are a different team. But then the challenge lies, you learn new things every time you handle all these things. So yeah, it becomes little challenging. But then, so would you initially when you started this service, were you yourself putting it on social media that I'm available for this service, or how did it all start? It started with couple of animals that I handled. I had just put it on Facebook, not for anything else, just like that, आज ऐसे ऐसे हुआ था. So I did this. There was a dog who had met with an accident. It had a spinal cord injury. So it was paralyzed on the back side, couldn't stand up. So we put it up somewhere and everything and all. And that point of time, I was volunteering for a NGO in Mangalore called Animal Caterers. So I was a volunteer with them. I wanted to learn a lot of things at that point of time. Eventually, I went on to do a course of a paravet as well. Just like we have paramedical staff, you have a paravet courses also to basically handle animal emergencies on the streets. There's so much of time duration wasted. Let's see, there's an accident here. From here till the time you go to a vet, in between that vital time is wasted. So I went on to do that as well and all those things and all. But then initially it was just either chota mota whatever you used to put and everything and all. And then there have been times whereby some you have no idea someone was actually shooting what you were doing. Some media people would have taken a video or something, and then that started going around. Eventually, I think it was mostly social media. Even for now, 80% of my cases are reported through social media. I have exited Facebook. I am more active on Instagram of late. Because that's where a lot of your younger crowd has moved on to of late. So a lot of people report cases on Instagram. I try and avoid giving my number as well, because it has its own issues again. Because there's a special kind of mafia prevalent in Mangalore called as the cattle mafia. So it's a huge mafia. It's a multi-crore mafia. So at a point of time, we thoda खून गरम था थोड़ा उस time पे lot of cases and all we had lodged a few FIRs and everything. तो उस time पे थोड़ा threat वगैरह आना शुरू हो गए थे. Oh my God! So then I stopped putting my number anywhere on social media. So anywhere of late, अभी भी जो भी है आप inbox करो मेरे को. You give me the exact details, the coordinates of this thing, location. I go and attend the case. But I've stopped giving my numbers out, because eventually those numbers, more than the usefulness, it becomes a pain. Oh my God! But like I said, that's mostly through social media. यहाँ पर भी challenges, इतने बड़े challenges है. There are. My God, there are. So in all this, I'm very keen to understand, your thought process, your feeling, when you get a case and you see that animal. Yes. How does that make you feel? What's the kind of feeling and thought that you have when you look at animals? To be very honest, people who have seen animals all their life, or who have been close to animals, whatever animal for that matter, you have a pet at home, your pet falls sick. The first thing that you do is you rush to the vet. Correct. That's the first thing. Logically. Correct. आप बीमार होते हो, बच्चे बीमार होते हैं, आपके parents. That's the first thing that we do. Yes. But what happens to the animals on the streets? Technically speaking, as per the constitution and everything, every unowned animal, जो भी हो, आपका वाइल्ड लाइफ हो सकता है, आपका जो भी रास्ते में जो कुत्ते, बिल्लियां, whatever, all these animals are the responsibility of the government. Right. But is the government actually having so many funds, or does it have the time to focus?
अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स itself if we take for human beings, you see the condition, you can make out what exactly is the situation. तो animals के लिए you really can't expect. It will happen someday. जिस तरह से we are developing, it will happen. But right now, the need of the hour is we like-minded people will have to come forward and do something. तो based on that, this thing, I try and do whatever little जो भी वो void जो बीच में आ जाता है ना, whatever the government is not, there a few people try to reach out. तो basically ultimately, as I said, आपका when people call, you first think you are the victim. You keep it, you think from that point of view, because you are lying on the street, your vehicle has hit you, you're lying on the street looking around, you don't know what is next, because you don't know you have to go to hospital, you don't know, you just are lying there numb, not knowing what to do, you're scared, you're in pain, and lying down in this kind of a heat. Sometimes animals die because of heat stroke more than because of the accident effects, because they are lying there for so many hours. Heat stroke eventually ends up creating issues in the brain, a lot of other things. So the first thing you try and do is, see, someone calling you, they would have seen it not immediately, they would have seen it later, so there would have been already a lot of time that would have been wasted. So what you try to do is you minimalize the time that is going to be wasted further. The moment you get a call, as fast as possible, I try and attend immediately. Unless I am held up somewhere, I pass it on to someone else, but I immediately go there. And a hurt animal, whatever animal it may, accident case, whatever jo bhi ho, that animal is far more scared than a normal animal, because it's already under pain. So you can't just go and touch the head of the animal. The animal will always bite you back, because someone has hurt it. So now it feels you also have gone to do the same thing. So again, there are ways to handle it. We usually muzzle the mouth, or we carefully catch it and everything. Large animals. I attend a lot of large animal cases as well. Accident we get on the highway here. We get a lot of bulls who usually are in heat and they end up with fights. And when they fight, and one of the bull's horns usually gets cut and broken. And this is a place whereby the horn is cut and it gets infected very fast. See, any animal with wound on the body, they lick it. They have antiseptic qualities in this thing. But something on the head, you are unable to lick it. Correct. So those wounds get infected and everything. And these are not animals that you can just tie up somewhere and you can, they're 500, 600 kilos. So what we usually go and do is, the first 1 or 2 days of mine goes in just going and getting friendly to them. You take some fruits, you take some watermelon or jo bhi ho, 10-15 kilo leke chale gaye, baithe, you try and feed them. And then the animals slowly start thinking, okay, this fellow is, I think he's fine. So the third day, what you do is mix tablets powdered in the same food and you give. This is something called as on-site treatments. Wherever whichever particular place the animal has been reported, you go and, without touching the animal, without even getting close to the animal, you just mix medicines in the food and you give. And that happens for the next 5, 10, 15 days, whatever, painkillers, antibiotics, whatever it takes. There comes a point of time after 4, 5, 6 days, you just go to the place and you honk your vehicle, and wherever the animal is, the animal comes running towards you. That's the kind of relationship you try and build. So first thing that anyone who has to realize, that I think the same thing applies to even human doctors as well. You think from the patient's point of view. Yes. Be it toothache or something else. Imagine the suffering someone has been going through. So we have to have that empathy. Sympathy to hai, but empathy also has to be there. So that's where it becomes a little easier. But like I said initially, I always keep it from that animal's point of view and then think, imagine how helpless the animal is feeling right now. Because there's nothing else. Nobody is going to come. You might die on the street itself. So that's the whole logic behind. दोस्तों, इन सारी बातों से ये समझ में आता है कि तौसीफ की एनिमल्स के लिए बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है, और ये यही दिखाता है कि वो एनिमल्स की नीड्स को लेकर बहुत सेंसिटिव है और बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक भी है। और शायद यही वजह है कि वो उन एनिमल्स की तकलीफों को समझ सकते हैं जिनका कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है या जिनके जीवन पर कोई खतरा है। वरना ये कैसे मुमकिन है कि कोई एक इंसान, कोई एक ह्यूमन बीइंग ये समझ पाए कि एक एनिमल उनसे
क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों, तौसीफ हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने आप को उन एनिमल्स की पोजीशन में रखकर देखना चाहिए, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा को महसूस करना चाहिए, जिन्हें रास्ते पर कोई उड़ा कर चला गया है और वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और मुझे बचाए। दोस्तों, ये सारे एनिमल्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एनिमल, हर इंसेक्ट, हर रेप्टाइल, उनकी इस धरती पर आने की कोई एक खास वजह है। हर एनिमल हमारे इस इकोसिस्टम का और ईश्वर के क्रिएशन का ही एक हिस्सा है और हमें इस बात का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तौसीफ ने हमें एक और बात सिखाई और वो ये कि हमें इन एनिमल्स के साथ पेशेंस रखनी चाहिए, बहुत धीरज रखनी चाहिए, क्योंकि इन एनिमल्स के साथ कनेक्शन बनाने में, उनके साथ अलाइन करने में बहुत वक्त लग जाता है और इसके लिए हमें हमारे अंदर एक ठहराव होना चाहिए और ये ठहराव वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल हेल्थ से ही आता है। इन एनिमल्स को हमें अपना वेल विशर स्वीकार करने में बहुत वक्त लग जाता है। जैसे तौसीफ ने हमें बताया कि वो कई दिनों तक इन एनिमल्स के पास जाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, दवाई खिलाते हैं, तब जाकर के कहीं उनके साथ कनेक्शन बन पाता है। हमें भी चाहिए कि हम हमारे अंदर इस तरह की सेंसिटिविटी डेवलप करें और यदि हमने ये कर लिया तो बिलीव मी दोस्तों, हम सब हमारी इस दुनिया को एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया बना सकते हैं। हमारे शास्त्र में भी हमें यही सिखाया गया है कि हम हर एनिमल को, पेड़ पौधों को और ईश्वर के हर क्रिएशन में ईश्वर का ही स्वरूप देखें। और यदि हमने इस तरह का पर्सपेक्टिव डेवलप कर लिया तो हर स्ट्रे डॉग में, हर स्पैरो में, हर पिजन में हमें ईश्वर के दर्शन होंगे। आगे बढ़ते हुए हमने तौसीफ से यही पूछा कि आपके अंदर तो ये एम्पैथी है, लेकिन बाकी सभी के अंदर इस तरह की एम्पैथी, इस तरह की सेंसिटिविटी कैसे डेवलप की जाए। तो आइए सुनते हैं तौसीफ ने हमसे क्या कहा। आजकल तो इंसानों में एम्पैथी दिखनी मुश्किल हो गई है। Yes, very true, very true, very true. ये you know, this empathy for animals, जी, how, what should be done to, you know, make everybody aware that they also have their own rights जी, to live on this planet. जी. How do we make that happen? मेरे ख्याल से आई थिंक आवर एजुकेशन सिस्टम इज फ्लॉड। जैसे वी हैव डिफरेंट क्लासेस में वॉट एवर यू कॉल पीरियड्स और वॉट एवर, तो म्यूजिक ऐड कर देते हैं, ड्राइंग ऐड कर लेंगे, कुछ वर्कशॉप्स ऐड कर लेंगे. देयर इज नो, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल प्रेवलेंट, देयर वाज अ सब्जेक्ट कॉल्ड मॉरल साइंस. Right. Yes. हफ्ते में 3-4 क्लासेस रहते थे उसके, बट दैट यूज्ड टू टीच अस हाउ टू डील विद योर एल्डर्स, हाउ टू ट्रीट किड्स, हाउ टू ट्रीट एनिमल्स. तो आई थिंक दैट needs to be there. At least हफ्ते में एक भी क्लास रख लो आप, specifically for animals and environment and a lot of other things. Because see, we are in a growing environment right now whereby the need of the hour is we need kind people. There was a point of time, yes, successful people are needed, but till we do not have kind people, that जो भी समथिंग मिसिंग बोलते हैं ना, आप जितना भी अच्छा खाना बना लो उसमें थोड़ा नमक भी कम रहेगा ना, तो इट विल नॉट टेस्ट. तो what I honestly feel is government should introduce some particular classes at least once or twice in a week, whereby, because that is the right age to tap in. It becomes like a permanent tinkling. जो tattoo आप करवाते हो ना, it remains particularly imbibed inside your heart. Yes. And like I said, it becomes a habit and it becomes your character over a period of time. Simple, very simple. Don't hurt animals. Don't throw stones. दिन में एक वाटर बॉल भर के आप बालकनी में रख दो, you will be saving so many. You will not believe the number of birds that die in Mangalore every year during summers just because they don't get drinking water. My God. That is the kind of pathetic situation we have, and this happens in a lot of other cities because of dehydration, because of and dirty water पी के तो और भी बीमार पड़ेंगे. So all these things are there. It's very simple. Saving lives, you don't need to jump on the balconies or कहीं पे कुएं में कूद गए, nothing. Just keep a bowl of water in a balcony or in your driveway, in your gardens. You will be saving so many lives. Squirrels, birds, so many animals come. So I think they're very small
टाइनी आई थिंक हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ना हम भूल जाते हैं कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी करना है, ऑल दिस थिंग्स आर देयर. तो I think targeting kids at a very young age, I think, is going to be the very easiest solution, because I think people of our age, if you try to tell them, who the hell are you to tell me, मैं जो मन चाहेगा मैं करूँगा, nobody wants to listen. Very few people will sit and listen. But kids, it's very easy. We also do something called as humane education programs. Okay. Whereby we go to schools, we go to colleges, जाके 1 घंटे का प्रोग्राम, we make a PPT nice, whereby whatever we do, we tell them throwing of stones is wrong, don't hurt animals, keep a bowl of water, biscuit डाल दो, खाना खिला दो, whatever, and then we give them our numbers as well to reach out in case of emergencies. More than anything, at the end of the class, we take puppies and kittens to the place, to the school. Okay. And even these kids who have never been exposed, they they feel okay, this is how it is. Some of them are scared, but then slowly touch it and this thing, and that fear goes away. So I think it's a very small and easy attempt which can be done everywhere, because there's so many schools and so many colleges. The outreach has to happen. That is the only thing, and I think this has to happen only probably in cities, and because as I said, villages and towns and all, वो नेचर से जुड़ाव पहले से ही रहता है बच्चों में, और आप जितने भी उम्र में आप बड़े होते जाओ, that is still there. But I think today you just go and meet a kid in Mangalore somewhere and ask them, how does a sparrow look? पता नहीं है, क्योंकि आप कहाँ पे हैं, आप स्पैरो नहीं दिखेंगे आपको कहीं पे भी. So that's the situation we have come to. So I think schools will be the easiest place to target. Only thing is आपको वो चाह चाहिए. That's all. दोस्तों, तौसीफ हमें बता रहे थे कि हमारे बच्चों में एक बहुत ही कम उम्र में अवेयरनेस क्रिएट करना कितना इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से वो इन एनिमल्स के लिए और भी ज्यादा सेंसिटिव हो सके. तो हमारे मन में यही सवाल आया कि हम मेट्रो सिटीज में रहते हैं और हम नेचर से कितना डिस्कनेक्टेड है, और इसके साथ साथ वी लिटरली लिव इन अ कॉन्क्रीट जंगल. तो हम किस तरह से इन एनिमल्स के साथ अपना कनेक्ट बना सकते हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज के पार्ट 2 में तौसीफ ने हमारे साथ इसी विषय पर अपने विचार शेयर किए हैं, और इसके साथ साथ कुछ बहुत ही क्रूअल रियलिटीज जो एग्जिस्ट करती है उसके बारे में भी उन्होंने हमें बताया, और किस तरह से तौसीफ एक क्रूसेडर बनकर, एक योद्धा बनकर इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है. तो बने रहिएगा हमारे साथ तौसीफ अहमद की कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए. इफ यू आर एन एनिमल लवर, then you should definitely not miss part 2. And if you are curious to know about animals and their coexistence with human beings, then you should definitely watch part 2. दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें. अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. हमने आपके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फूड फॉर थॉट लिखा हुआ है, उसे जरूर पढ़ें, आपकी प्रतिक्रिया दें, आपके कमेंट लिखें. और अभी तक यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सके. तो बहुत जल्द मिलेंगे तौसीफ अहमद की कहानी का पार्ट 2 लेकर. तब तक के लिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. नमस्कार.